Welcome to Educare again. Our next question is Kioni, a very important question, and these type of questions are asked these days in the exams. You should assume that today's date is 1st March 2023. Kioni is the managing director of 100% shareholder in Nikio. Nikio Limited has no other employees. For the year ended 5th April 23, Nikio Limited tax adjusted trading profit after taking account of director remuneration and employees class 1 NIC is forecast to be 100,000. Nikio Limited will pay Kioni's gross director's remuneration of 47,500 and dividend of 68,000 for the tax year 22-23. Kioni does not have any other income. Based on this figure, the tax and NIC for Kioni and Nikio Limited for the year ended 5th April 23 will be: income tax for Kioni 31,807, class 1 NIC contribution 4628, while employer NIC and corporation tax is given. Kioni is concerned that she has not been saving for her retirement, so she is therefore planning to make a gross pension contribution of 20,000 before 5th April 23 during the tax year 22-23. However, Kioni is unsure whether the pension contribution should be made by Nikio or made personally by her. If the pension contribution is made by Nikio Limited, the company will make a pension contribution of 20,000 into the company's personal pension scheme on Kioni's behalf. And if the pension contribution is made by Kioni herself, Nikio Limited will pay her additional director remuneration of 20,000, and Kioni will then make a personal pension contribution of 20,000 gross. For each of the two alternatives of Kioni making a pension contribution of 20,000, company pension scheme or additional director remuneration, and then Kioni's personal making a personal pension contribution. Calculate revised figures for each of the four tax and NIC figures already calculated for the year ending 5th April 23. So what we have to do, we have to consider the change in remuneration has effect on these tax contributions, tax calculations. Under the additional director remuneration and personal pension contribution, you are expected to produce full income tax and employee class 1 NIC computation. And if applicable, you should state if any of the four tax and NIC figures already calculated remain unchanged, and you should assume that the rate of corporation tax remains unchanged. In case of this first option, there is no change in Kioni's income. His taxable income will remain the same क्योंकि कोई उसे additional amount नहीं मिल रही, और whatever is the amount contributed by the company or employer is said to be the exempt benefit. So चूँकि Kioni का कोई भी remuneration change नहीं हो रहा, तो इसलिए tax liability, Kioni की income tax liability employee 1 NIC contribution, it will remain the same. While in case of Nikio, the employer class 1 NIC contribution will remain the same क्योंकि ये सारी डिपेंड करती हैं इनकम ऑफ एम्प्लॉई पे, तो इनमें तीनों में कोई चेंज नहीं आएगा. These three remain unchanged. Why so? 20,000 provided by the employer. एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इज एग्जाम बेनिफिट. सो कोई टैक्सेबल इनकम में इजाफा नहीं है, कोई इनकम टैक्स ऑफ कियानी की कैलकुलेशन में चेंजिंग नहीं है. देयर इज नो चेंज इन द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स फॉर कियानी. As far as employee class 1 NIC concerned or employer class 1 NIC concerned, there is always no change. Also no change. Why so? क्योंकि employee की इनकम में कोई चेंज नहीं है, because there is no change in income. हाँ, कॉर्पोरेशन टैक्स में चेंज आएगा, और ये कि आपके पास ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ये 1 लाख का 19% कॉर्पोरेशन टैक्स है 19,000. But as now company is contributing 20,000, so this is expense for company. So company's profit will decrease to 80,000, and now they have to pay 80,000 19%, and that is 15,200. So this is the revised calculation of this tax. Now we need to consider the second option. Second option में
If the pension contribution is made by Kioni personally, अगर वो खुद से अपनी contribution करती है, Nikko Limited will pay her additional direct remuneration of 20,000. So यहाँ पे इसकी इनकम में इजाफा हो जाएगा, 20,000 इसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, एंड शी विल देन मेक अ पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन ऑफ 20,000 ग्रॉस, और यह कंट्रीब्यूशन करने से उसकी बेसिक रेट बैंड में भी एक्सटेंशन हो जाएगी. सो हियर वी नीड टू प्रेजेंट अ फुल कैलकुलेशन. First, he has a remuneration of 47,500. Now he is receiving extra 20,000. So his total remuneration is 67,500. And apart from this, he is also receiving a dividend of 68,000. So his total income is 1,35,500. And on this we have to calculate the tax liability, but before that we have to consider what is the extension in his basic rate band. So basic rate band was 37,500. As he paid 20,000 gross amount, so it has extended to 57,500, right? Second thing we need to consider is the amount of, is that 47,500 or 47,500, right? It is. So we have to consider the adjustment in the personal loans. For this we have to calculate the adjusted net income, और adjusted net income के लिए 1,35,500 में से डिडक्ट कर देंगे 20,000 जो कि ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है. सो इट इज़ 1,15,500. सो व्हाट इज़ द पोर्शन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख. 1 लाख से ज़्यादा कितना पोर्शन है, ये आ गया 15,500. सो इसका हाफ 7,750 is to be deducted from 12,570 of personal loans. So when we deduct this, we have adjusted personal loans of this is only 4,820. So 4,820 is personal loans. So now we have to consider, after deducting the 4,820 of personal loans from the total income, we have income left. That is 1,30,680. On this income we have to calculate tax, right? So first we have to consider the basic rate band. The extended basic rate band is 57,500, and on this the tax liability would be 20%, and this will be 11,500. Next we have to consider how much of this income is in excess of this band, and then we have to calculate on the tax on this. So first we need to consider, out of total 67,500 of his income, we have tax 57,000. Okay, it is wrong actually. Mistakenly I have recorded 35,500. It is in fact current year allowance basic rate band as 37,700. So it is 37,700 that will be tax. So 37,700's 40%, 20% would be 11,540. So this is our basic tax. Now we have to consider how much of our income, 67,500 of income, how much we have taxed, which is 57,700. Remaining amount to be taxed is और अब हमने सेकंड पार्ट के लिए देखना है कि उसकी इनकम है 47,500. इसमें 20,000 उसे फर्दर मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से. So his remuneration is now 67,500. Plus this he is also receiving 68,000 of dividend. So a total income इसकी होगी 1,35,500. Now we need to consider two things.
एक तो उसकी क्या एडजस्टमेंट है पर्सनल लोन्स में, एंड सेकंड उसका एक्सटेंडेड बेसिक रेट बैंड क्या है. सो एक्सटेंडेड बेसिक रेट बैंड है 37,700 का. एज ही मेड 20,000 कंट्रीब्यूशन ग्रॉस, so it will be increased to 57,700, right? So it is this basic rate band, extended basic rate band. Second, we need to consider the adjustment in personal loans. For this, we have to calculate adjusted net income 1,35,500 minus gross contribution give you 1,15,500 of adjusted net income. Remember, adjusted net income फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिडक्ट कर देते हैं ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन. सो हमने डिडक्ट की. नाउ वी वांट टू सी दैट हाउ मच ऑफ दिस पोर्शन इज इन एक्सेस ऑफ 1 लाख. 1 लाख से कितनी ज़्यादा इनकम है. एडजस्टेड नेट इनकम दिस इज 15,500. मेक इट हाफ. ये आ गया आपके पास 7750. तो ये आपकी रिवीजन है एडजस्टमेंट ऑफ पर्सनल लोन्स की. सो वी नीड टू डिडक्ट 12,570 minus 7750 and this will be 0284 4,820 as your adjusted personal loans. अब आप adjusted personal loans जैसे लेस करेंगे and you will get the amount 1,30,680. इस पे अब आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है. सो फर्स्ट 57,700 पे जो कि बेसिक रेट बैंड में आती है अमाउंट, फर्स्ट 57,700 पे 20% टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा एंड दैट विल बी 11,540. जस्ट अ मिनट, इट इज़ 11,540. सो ये आ गई 57,700 पे. नाउ वी नीड टू कंसिडर दैट डिविडेंड के फर्स्ट 2,000 के पोर्शन पे एग्जम्पशन होती है. सो बिफोर दैट हाउ मच ऑफ अदर इनकम रिमेन्स दैट ऑन विच वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी. सो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं नॉन सेविंग इनकम की. सो नॉन सेविंग इनकम इज 67,500. फर्स्ट टू डिडक्ट 12,570 no 4,820 of adjusted personal loans from non-saving income. So you will have amount of 0.8626 62,680 remaining income. Out of this we have been taxed 57,700 of income. हम इस पे 57,700 इनकम टैक्स कर चुके हैं. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. आपने ये कंसिडर करना है कि जब आप नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम या डिविडेंड इनकम तीनों होते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू डिडक्ट द पर्सनल लोन्स ओनली फ्रॉम नॉन सेविंग इनकम. सो हम सिर्फ नॉन सेविंग इनकम में से डिडक्ट करके ये फाइंड आउट कर रहे हैं कितनी नॉन सेविंग इनकम अब आपकी 40% पे टैक्स होगी. सो 67,500 में से हमने पर्सनल लोन्स लेस किया, बाकी आ गई इनकम नॉन सेविंग इनकम 62,680. इसमें से 57,700 हम टैक्स कर चुके हैं. रिमेनिंग इनकम रहेगी आपके पास, ये रहेगी 9 एंड इट इज़ 4,980. इस 4,980 की इनकम पे अब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे 40%. देन यू हैव टू कैलकुलेट 4,980 पे 40%. सो दिस विल बी 1,992. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन. अगेन समझ लें इस बात को कि आपके पास ये जो 130,680 की इनकम है ये टोटल इनकम है, इसमें डिविडेंड भी शामिल है. डिविडेंड इज इंक्लूडेड इन दिस. वी हैव टू सेपरेटली कैलकुलेट व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी टैक्स्ड एट नॉन सेविंग इनकम रेट, जिसके लिए नॉन सेविंग इनकम में से पर्सनल लोन्स, एडजस्टेड पर्सनल लोन्स डिडक्ट किया, 57,700 की इनकम डिडक्ट की. सो वी गॉट दैट remaining 4,980 of non-saving income will be taxed at 40%. Then first 2,000 of dividend
will be taxed at 0%, so it will be 0, and next 66,000 of your dividend will be taxed at 33.75%, the current year rate. So this will be 22,275. So hence total tax liability would be this is 35,807. This is total tax liability, right? अब हमने असेस करना है कि एम्प्लॉय की क्योंकि इनकम बढ़ चुकी है, अगर इनकम बढ़ चुकी है तो उसकी एनआईसी कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 50,270 माइनस 12,570 इस अमाउंट पे 13.25 एंड 67,500 minus 50,270. This is in accordance with rate of NIC 3.25%. So ये इसकी टैक्स लायबिलिटी में इजाफा होगा. So it is 50,270 minus 12,570 multiplied by 1325. This is 4995. And second, 67,500 minus 50,270 multiplied by 325%. This is 560. So if we make it total, this will be 9615, 15 and 5, 5,555. So next we have to consider what is the change in the employer tax liability. NIC tax liability, employer की NIC liability पहले 5779 है, so it is 5779. अब एम्प्लॉयर चूँकि 20,000 फर्दर इनकम प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को, तो उस 20,000 पे जो टैक्स लायबिलिटी का इजाफा होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 20,000 into 15.05%. So it will be 3,010. So 3,010 का इजाफा हो गया. 5779 प्लस 3,010, ये टोटल अमाउंट आ जाएगी 9878. So now this is the revised NIC 1 employer contribution. So ये employer की contribution revise हो गई, right? And then we have to consider now what is the amount of tax the employer has to pay. He has an income of 1 lakh. As now he is providing 20,000 further amount to Kioni. So his income of company reduced to 80,000. Then further this 3,010 is also paid by employer. So it will also reduce the taxable income. So now the taxable income is 76,990. On this income we have to calculate the NIC tax liability. So tax liability, corporation tax liability is calculated at the rate of 19%. So this will be 76,990, 14,628. So remember that these are the effect of change in income. तो आपको याद रखना है कि एक एम्प्लॉई की इनकम में चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है. फर्स्ट स्टेप में एम्प्लॉई की इनकम चेंज नहीं हो रही थी, तो ना ही हमने चेंज की इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई, ना NIC कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई, ना NIC कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, राइट. सिर्फ टैक्स लायबिलिटी टोटल थी वो चेंज हुई. इन द सेकेंड केस वी हैव कंसिडर्ड दैट देयर इज़ अ चेंज इन income of employee. So as a result of this, employee contribution will also change, employer contribution change, and also the tax contribution, tax payment of or tax calculation of employer also changes.